हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिकवुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम करेंगे फाइनली द लेटेस्ट मैकबुक एयर M4 चिप का टीयरडाउन जो हमारे पास है, जिसका हमने अनबॉक्स किया था, द लेटेस्ट स्काई ब्लू कलर। आज हम करेंगे इसका इन डेप्थ टीयरडाउन, जिसमें हम चेक करेंगे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मॉड्यूलर है और नॉन मॉड्यूलर है, और इसके अलावा हम चेक करेंगे हाउ इजी इट इज़ टू रिप्लेस द पार्ट्स। और बिफोर प्रोसीडिंग विद द टीयरडाउन हम चेक कर लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से टूल्स लगने वाले हैं। सबसे पहले हमें लगेगा एक हाई क्वालिटी सक्शन कप टू रिमूव द बॉटम प्लेट अलॉन्ग विद नायलॉन स्टिक। इसके अलावा हमें लगेगा एक ट्वीज़र एंड लास्टली हमें लगेगा एक स्क्रू ड्राइवर सेट, जिसमें हमें मोस्टली लगने वाला है टॉक्स T5, टॉक्स T8, टॉक्स T3, T2, T4 एंड एट द लीस्ट हमें लगेगा बॉटम प्लेट को ओपन करने के लिए पेंटालूप P5 स्क्रू ड्राइवर। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टीयरडाउन। So this is the new beautiful sky blue color. Let's start the teardown. सबसे पहले हमें बॉटम से 1, 2, 3, 4 4 पेंटालूप P5 स्क्रूज को निकालना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंटालूप P5 स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट हमें सक्शन कप यूज़ करना है हाई क्वालिटी, इसे प्रेस करना है एंड विद द हेल्प ऑफ स्पर्जर हमें इसे लिफ्ट करके यहाँ पर से स्लाइड करना है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। देयर आर 4 लॉक्स 1, 2, 3 एंड 4 इन 13 इंच, और 15 इंच के अंदर देयर आर 6 लॉक्स। अभी हमें नीचे की तरफ पुल करना है इसे 1, 2, 3। सो दिस इज द bottom panel made up of aluminium, good quality. Let's keep this aside. So let's check the internals first. सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है hinge covers. This is the right speaker, this is the left speaker, and here is the antenna module, and beneath this plate is the main display connector. और यहाँ पर हमारा main logic board beneath this plate, जिसे हम निकल के चेक करेंगे, and this is the complete battery module. और यहाँ पर है trackpad, और trackpad से यहाँ पर जा रहा है ट्रैकपैड केबल टू द मेन लॉजिक बोर्ड, एंड दिस इज द बैटरी कनेक्टर। सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ टॉक्स T3 स्क्रू ड्राइवर। विल सिंपली पुल दिस कनेक्टर। सो हमारा बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुका है, एज यू कैन सी। लेट्स टर्न दिस अराउंड। नेक्स्ट हम हिंज कवर्स निकाल लेंगे with the help of Torx T3 screwdriver made up of plastic. Next हम ये दोनों metal brackets निकाल लेंगे with the help of same Torx T3 screwdriver. One screw is beneath this ribbon cable. यहाँ पर से हम 2 स्क्रू निकाल लेंगे with the same Torx T3 screwdriver. And now we'll gently pull both these connectors. So हमारा डिस्प्ले केबल डिस्कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे both the speakers, बट पहले हम निकालेंगे all these metal plates from here with the help of same Torx T3 screwdriver. Now we'll remove 1, 2, 3, total 6 screws to remove both the speakers. We'll use Torx T5 screwdrivers for this. This is the speaker module. Let's keep this aside. We'll remove the speaker now. This is the another speaker. Keep this aside. Next we'll remove this 1, 2, 3 metal plates with the help of Torx T3 screwdriver. Now we'll disconnect this. This is the lid angle sensor for the display. Let's disconnect this. And with the help of Torx T2 we can remove this lid angle sensor cable as well.
So this is the lid angle sensor. Let's keep this aside. Next we'll remove this trackpad cable as well, just by simply pulling it. This is the trackpad cable, very long cable. Now we'll remove this sticker from this side. And now we'll remove this metal plate with the help of Torx T3 screwdriver. We'll disconnect these cables. This is the USB Type-C connector. This is the MagSafe 3 charging port connector. And here is the mic array mostly. So we have removed the mic, both the USB-C connector and the MagSafe 3 charging port connector as well. We'll also disconnect this headphone jack connector as well. अभी हम निकालेंगे सारे स्क्रूज इस मेटल प्लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8. These two screws are Torx T3. Then rest of the screws seems to be Torx T5. We'll disconnect this cable as well. We'll disconnect this as well. So it is still very tight. I think we'll have to remove this single screw as well. Now we'll have to simply pull this. So we have removed the main logic board. So beneath this is the main M4 chip. Let's keep this aside. Now we'll disconnect all the modular ports one by one. सबसे पहले हम निकाल लेंगे headphone jack with the help of Torx T5 screwdriver. So this is the modular headphone port. Let's keep this aside. Next we'll remove both the USB-C ports. So these are the USB ports. So if anything goes wrong with the port, you can change them easily. Good that they are modular ports. Let's keep this aside. Next हम निकालेंगे this MagSafe charging port. So MagSafe 3 charging port निकालने के लिए आपको लगेगा Torx T3 and Torx T5 screwdriver. So this is the MagSafe 3 charging port, as you can see. Again modular port. Let's keep this aside. Next we'll remove Touch ID button with the help of Torx T3 screwdriver. So this is where the connector connects. We have removed the metal plate. Now we'll remove all 1 2 3 4 5 6 Torx T3 screws with the help of Torx T3 screwdriver. We'll disconnect this. So this is the cable we have removed. We'll open this and pull the button upwards. So here is the Touch ID button, which acts like a Touch ID sensor as well as on-off switch to forcefully shut down the MacBook if in case it gets hanged. Let's keep this aside. Next we'll remove this daughterboard as well. Torx T5 screwdriver to remove this big screw. We'll have to pull this. Be very careful because काफी delicate है ये, so take extra precautions. So this is the daughterboard. So if your keyboard is not working, your backlight is not working, or your Touch ID button is not working, so this particular board could be the reason. Let's keep this aside. Next we'll remove the display assembly by pulling out this 1 2 3 4 5 6 Torx T8 screw. Let's lift the hinges. And now we'll simply pull this off. So we have successfully removed the display assembly, as you can see. These are the connectors. This is for webcam and backlight mostly, and this is the main display connector. And there is no MacBook Air written on this bezel, and now this bezel is made up of plastic, not of glass. And these are the hinges calibrated by Apple to open the lid with single hand. Let's keep this aside. Next we'll remove the trackpad. By removing this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Torx T5 screws. So with the help of Torx T5 screwdriver, we'll remove all the screws from the trackpad. Now we'll simply pull this top case. The trackpad is already removed.
gently remove this cable. So this is the trackpad. This is the cable. Let's keep this aside. So this is the top case assembly. So the top case assembly includes the physical bottom chassis along with the keyboard, and its backlight sheet. This is the battery module. The battery is removable by pulling out these stretchable adhesive tapes. That's it. Nothing else comes in the top case. So we have successfully teared down each and every part. Let's keep this aside. So now we'll check the motherboard to check the main M4 chip. So first we'll have to pull out this sheet, जिसमें से हमें निकालना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 Torx T3 screws with the help of Torx T3 screwdriver. So let's remove this plate. So we have pulled this off, and this is the main logic board. Let's clean this mess. So this is the main logic board, as you can see. This is the main M4 chip, and these are the 8 plus 8 GB total 16 GB of unified memory. These are the storage, 128 plus 128 GB total 256 GB storage. Let's have a close-up look. सो दोस्तों, आई होप आपको हमारा आज का टीयरडाउन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। इसी तरह के मोर ऑसम कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। बहुत जल्द मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।